आगे बढ़ते हैं, मार्केट प्रोफाइल के बारे में लर्निंग करते हैं। पीपीटी बना हुआ है तो उस पीपीटी को बेस करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर हर कहीं अवेलेबल नहीं है, तो शायद आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करें, विल नो मोर अबाउट दैट सॉफ्टवेयर, और लेट्स सी व्हाट स्ट्रैटेजी यू फॉलो। तो लेट्स स्टार्ट। Alright, please. I'll start with the slideshow here. Yeah. So we'll talk about auction market theory and market profile. Now, before starting, what market profile actually is, market profile was actually invented by a gentleman called J. Peter Steidelmeier. Okay. ठीक है, he was a trader in the Chicago Board of Trade. He used to trade commodities, grains, currencies, everything almost he traded. So उनकी फिलॉसफी ये थी कि मेरे को एक ही चार्ट पे टाइम देखना है, प्राइस देखना है और वॉल्यूम देखना है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मुझे एक ही साथ देखनी है, एंड थ्रू दीज थिंग्स आई वांट टू नो कि वैल्यू क्या है, किसी भी एक टिकर की वैल्यू क्या है। अगर मेरे को रिलायंस का चार्ट खोल के देखना है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आई शुड नो कि अभी उसकी वैल्यू क्या चल रही है। एंड वैल्यू का मतलब उसका ये था कि कितना टाइम स्पेंड हो रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ओके। जितना टाइम वहां स्पेंड होगा उतना बिजनेस वहां आएगा, और वही वो प्राइस वैल्यू बनता जाएगा। राइट। सो उनकी फिलॉसफी ये थी कि मेरे को वैल्यू ढूंढनी है चार्ट्स के अंदर। आई डोंट वांट टू ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस, आई वांट टू ट्रेड बेस्ड ऑन वैल्यू। वेयर इज द वैल्यू? राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल. So for example, if I make a car, right, and मैंने कार बनाई and I went to the market and I overpriced that car, right, कोई भी नहीं खरीदेगा, no volumes will come in, right, no customers will come in. Suddenly I will realize कि अच्छा ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है मैंने, I will lower my price, right. Suddenly at the lower price demand तो आ रही है, but मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऑन एवरी सेल आई एम मेकिंग अ लॉस। सो वेयर इज द वैल्यू? द वैल्यू इज समवेयर इन बिटवीन, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्रू मार्केट प्रोफाइल. Market profile will tell us where the value is of that particular ticker, be it Nifty, being Bank Nifty, for every particular day, and based on that value, we will take trades. But is it every particular day or every particular moment भी हो सकता है कि मुझे अभी का देखना है एग्जैक्टली इस मोमेंट पे? So हर दिन का मार्केट प्रोफाइल चार्ट बनता है। हर दिन का बनता है? हर दिन का बनता है। The software takes care of that. अच्छा। And for every day you can clearly see कि आज का वैल्यू क्या बन रहा है, वैल्यू एरिया कहाँ बन रहा है। मुझे हर घंटे का देखना हो तो? हर घंटे का you can I mean obviously you can see that the software is capable of that, but it works best जब आप पूरे दिन का वैल्यू देखेंगे। Okay, fair enough. चलिए आगे बढ़ते। Alright, so नहीं बोलिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। Okay. बात सारी करके जाइए यहाँ पे। अच्छा, so पहले शुरू करते हैं। This is the I'd say this is the most important screen to me. What trading is and what trading it isn't. ठीक है? Let's start with what it is column, right? It is a way to create wealth from my excess capital. All right. The excess word is very important. It's a way to create wealth from my excess capital, not from my main capital. All right. जो excess पड़ा हुआ है, मैं उससे trade कर रहा हूँ, and I'm trying to generate a return from the excess capital. Why? Because obviously I don't want to create a headache कि अगर मेरा main capital कहीं चला गया trading losses के अंदर, तो I mean how will I run my house, right? तो main capital कहाँ है? Main capital मेरा CFA से आता है, right? And okay, so the next point is 20% tools and techniques, 80% psychology. The biggest part in trading is obviously psychology. You can use all the tools and techniques you need, but psychology you can never escape, right? You have to have a very good, strong psyche, a very good, strong emotional, emotional, what do you strength, call it? Yeah. Emotional strength, yeah. Right? The third point is that trading is a business. You have to look at it as a business. You cannot look at it as, as gambling, as pure gambling. You have to look at it professionally. The moment you start looking at it as a proper business, that's when you will start making more and more money, right? So again, trading is not my primary source of income. It should not be your primary source of income. Also, it is not a way to boost my ego. And because as I said earlier, the moment you involve ego into any part of your life, be it trading or in any other business, things will go wrong. All right? So एक क्वेश्चन। हाँ जी। आपने कहा कि ट्रेडिंग जो है it should not be a primary source of income. Right.
प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जैसे आपने हमारा प्रॉप डेस्क देखा नीचे में, राइट तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने इसको अपना बिजनेस ही बना रखा है राइट कि सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, राइट तो उनके लिए तो प्राइमरी सोर्स उनके लिए प्राइमरी सोर्स है। यस, वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, उनको ज़्यादा हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं उस चीज़ में। बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ में जितना स्ट्रेस कम हो उतना लॉन्ग यूल लिव। हाँ, तो आप दिस इज फॉर एक्चुअली फॉर पीपल हु आर वांट टू गेट इनटू इट फुल टाइम। ठीक है, जो एक्सेस कैपिटल है उसी से स्टार्ट करो। ओके, सो trading for me personally, it's now my primary source of income, because obviously I do it full time now. ये मैं और लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा जो obviously जो पार्ट टाइम करते हैं ट्रेडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ फुल टाइम जॉब, यू कांट डू इट पार्ट टाइम। एंड होता क्या है कि लोग अपना सैलरीज वाली सेविंग से उठा के दे स्टार्ट ट्रेडिंग विद दैट मनी, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। सो I would always suggest that you trade with your excess capital, unless you're doing it full time, obviously. Got it. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So moving on to the next slide. Here we have our list of points that have actually worked for me in trading over the years. एक concept मैंने CFA में सीखा था, इसको बोलते हैं reversion of polarity. What reversion of polarity means that when a support is broken, it becomes a resistance, and when a resistance is broken, it becomes a support. Correct. These zones that were previously a support or resistance and have now become the opposite, these zones are extremely important zones. Once you get a good grasp of what is happening in these zones, a good grasp of the price action happening in these zones, you can sort of make a good probability-based trades, and you can, make some very successful trades from these zones. The next point is reading the OI charts. Open interest charts, they help only to some extent. I don't suggest people कि तुम सिर्फ charts ही देखो, open interest charts ही देखो. You should always look at them in conjunction with the price charts of the underlying. They give you a very good conviction of market participants. Okay. Because if the price is moving upwards and the open interest is also moving upwards, it tells you how how strong the underlying business is. Okay. Then the third point is, and this is actually a very potent one, this is known as the midpoint of a momentum bar. So momentum bars in my definition is a Marubozu bar, what you call a Marubozu bar, right? A bar with minimal wicks on both the sides. So such momentum bars, the midpoints of such momentum bars act as a very good zone of support and resistance. True. Right. After that, we get into the meat of the subject, which is auction market theory principles and obviously market profile. Okay. The last point here is, and this is just me, I have been doing strangles for a very long time now, and I have been making a decent amount of money, around 4 to 5% a month. I think strangles are one of the most underrated strategies. People like to do, very complex strategies, but I think the more you keep it simple, especially in options, the more money you'll make. So I stick to strangles, and now let's move on to auction market theory and market profile.